Hi everyone, welcome to today's video. So many of us are holding some railway stocks, defense stocks, and ये जो themes हैं, these two themes, these have given massive run up in the last 1.5, 2 years and have given literally like multi-bagger returns. But now the question is that if you're holding these type of stocks, should you cut your position? The short answer looks like a yes. So आप cut करोगे, then you will say कि अच्छा, I am betting on India's infrastructure growth. So much money is coming in India's infrastructure. So where can I invest that money? Now see guys, I will just go and help you understand this point by using an example. So जैसे आप RVNL का example देखो, so the stock went from 33 rupees all the way till 600 and almost 30 rupees, 630 rupees, right? So multiples हो गए. Has the profits grown proportionally? So आप अगर profit numbers देखोगे, revenue numbers देखोगे, तो no, it's not like last 2 years में profit have gone like 5 times, 6 times. No, it hasn't happened that way. In fact, last 2-3 साल से almost similar सही level पे है, बहुत ज़्यादा change नहीं हुआ है. So these are dangerous stocks, but they definitely play into India's infrastructure story, so to say. Then comes a natural question, कि Akshat, you probably missed this rally. Yes, I missed the rally. Therefore, I'm making this video so that I can analyze my mistake. I can look at certain facts independently. And the next time I can make better investment decisions and इस तरीके के stocks भी हम catch कर पाएं, because it's very easy to say कि आप rail में नहीं करना चाहिए, आपने airways में नहीं करना चाहिए, आपने ship में नहीं करना चाहिए and all that. I also say that. But see, if the market is telling us something, we have to respect it. And accordingly, we have to change our investment orientation, investment style. So this is an analytical video where I will teach you how to analyze some of the infrastructure stock. I'll pick a case study and I will analyze it deeply so that in case you are looking to add some infrastructure stocks to your portfolio, you can possibly look to do a similar analysis. So this is not a stock recommendation, advice and all that stuff. I'll tell you story point wise manner. So point number 1 is that देखो, अब आप डिफेंस स्टॉक्स पकड़ लो या रियल स्टॉक्स पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो इनमें से, राइट? दीज थीम्स हैव रन अप लाइक एनीथिंग. पुटिंग मनी ऑन दीज थीम्स राइट नाउ डज नॉट मेक मच सेंस. देन यू से कि अच्छा चलो एयरलाइंस पकड़ लेते हैं. तो एयरलाइंस में भी आप देखोगे, सो लेट्स लुक एट इंटर ग्लोब एविएशन विच इज़ इंडिगो. सो यहाँ पे आप देखोगे, सो इट वॉज हाउ मच, राइट? सो रफली 2 years बैक इट वॉज 1700-1800 रुपीज़. नाउ इट हैज़ मोर देन डबल्ड, राइट? सो दिस हैज़ ऑल्सो गिवन वेरी गुड रन अप. सो यहाँ पे कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लग रही है, राइट, वेयर वी कैन पिक समथिंग विच इज़ अंडर वैल्यूड डिस्पाइट द मार्केट बीइंग रियली रियली हाई. नाउ आई डोंट नो वेदर दिस इज अंडर वैल्यूड और नॉट, बट आई विल जस्ट क्विकली टेल यू द केस स्टडी ऑफ SpiceJet. I feel that this is an interesting stock more than anything else. Further study needs to be done, but I will at least point you in the right direction where you can start studying this stock more diligently. There is possible money to be made, right? So let us study that stock. And the reason why I picked up SpiceJet is very simple, that it is actually going through a turnaround. Now, what is the meaning of turnaround? इसके मैं बहुत simple सी story आपको बताता हूँ. If you actually look at the phase of 2014 for SpiceJet, this was facing a lot of issues back in 2014. So if you want to just quickly pause the video, read through the challenges that it was facing, this was the issue, right? And bunch of issues थे उसमें भी employee firing चल रही थी, crude के prices ज़्यादा थे उस time पे, वगैरह वगैरह problems, and they had to ground their entire crew, so to say. And यहाँ पे the stock fell all the way from 86 rupees and ये गिर पिट के like 14-15 रुपए तक, 14-15 rupees तक it was there. But what happened next was truly amazing. उसके बाद crude prices came down and the stock went from 15 rupees to almost 150 rupees. So 10x gain आ गया था उसमें. Okay? अभी भी आप देखोगे कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट 2 years, दिस इज दी सेट ऑफ इशूज दैट SpiceJet वॉज फेसिंग. इंजन फेलियर वगैरह वगैरह, दुनिया भर की प्रॉब्लम, फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज, टैक्स नोटिसेज एंड अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर. एंड डिस्पाइट द मार्केट रनिंग, राइट, द स्टॉक हैज बीन hovering around this. So is it a good turnaround story? Is this something that we could consider? So let's study it. Even I'm not putting my money as of now on SpiceJet, but this is an interesting stock to study. So that is the spirit with which I'm going to teach you this video. Please do not consider this as stock recommendation, stock advice, all that stuff. I'm just helping you understand a case. I'll be very happy अगर आप लोग counter arguments देते हो. Engage in intelligent conversation. That is the goal with which I am teaching. So please consider it in that regard. And in case some of you are interested in learning more about stock markets, I am running a 30-day email course, right? So जब आप scrolling करते रहते हो तो email पढ़ लेना, right? आपको notification वगैरह मिल जाएगा. So in 30 days, you will learn the basics of stock investing. So you can sign up for that in the description and comment box. You can also join my member community on YouTube. The prices are very affordable. Every day I come and talk about the stock markets so that it teaches you whatever currently is happening in the market. So that's probably the best way of learning about stocks. So definitely do check us out. Now we are India's #1 or the biggest
investment community now. So thanks to all the serious users who have trusted that community. So anyways, coming back to the SpiceJet stock, the first key thing that you will notice is that, see, this is not the first time that SpiceJet is having a problem. It has had multiple problems in the past. जैसे 2014 वाला केस भी था. So I will just quickly write this down. So this was the first turn around, right? कि यहाँ पे ये turn around हुआ था. यहाँ पे भी इसका एक बार turn around हुआ था after 2008 crisis. And ये 2020 crisis है एक तरीके से कि जिसके बाद उठा नहीं है, उसी लेवल पे घूम रहा है स्टॉक. So now if it goes up, there is potential, or there are probably potential gains to be made, right? So let's figure out that whether this stock can turn around or not turn around. So for this, you need to study three critical things. Number one, you need to understand the overview of the airlines industry, that the industry, is it going to go up, expand, or is it going to go down? That's one. Second is that you need to do an internal analysis of SpiceJet, and here the first key point that you should know is that what was the precise problem that SpiceJet was facing, and will it be able to turn it around? So जैसे कि will it be able to preserve its market share as of now, why it will be able to do it. The third key thing is that you need to understand what are the tailwinds and headwinds on the stock. So tailwinds और headwinds का मतलब होता है कि जैसे budgetary support मिल रहा हो airlines industry को, then almost all the airline stocks are going to benefit from it. Now if there is a lot of consolidation happening, or ATF, aviation turbine fuel के price अगर कम होने वाले हैं, then almost 60% of an airline's cost structure is made up of ATF. So अगर वो सब चीज़ें होने वाली हैं, then those are positive developments. Those are called as tailwinds. So अगर ऐसा कुछ होने वाला है, then definitely these type of stocks can become somewhat multi-baggers even in a running market. So इन तीन points को analyze करते हैं फटाफट without boring you much. Now like railways, we require airlines, and the saturation point of airways or air traffic is not there as of now in India. In fact, there is massive demand for air travel in India. आपने देखा होगा when you go to airport, भाई साहब एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन टाइप बन गया बहुत सारे, राइट, कि यहाँ पे लोग नीचे बैठे रहते हैं and what not stuff. I am just saying it as fun, but आपने देखा होगा, राइट, कि there is like just massive demand for air travel right now in India. And in fact अगर आप AC2 और air travel की prices compare करो तो यार almost similar सी हो रही है हर जगह, right? So to cut the long story short, air travel is very very important in India, and the amount of traffic that used to be there. So for example मैं आपको pre-COVID data दिखाता हूँ. So almost 69.48 million passengers used to travel, and अभी this number is 57 million. So यहाँ पे भी पूरा एक तरीके से demand has not come out in a full-fledged manner. यहाँ पे भी it's remaining. That's part A. Part B is that as per a McKinsey study, ये ने कुछ numbers project कर रहे थे कि 2016 में these are the number of people who will travel by airlines and all that stuff. So by 2030 these are all rising estimates. In fact बहुत सारे airports बन रहे हैं. अभी बजट में भी announcement हुआ था, जो इंटरिम बजट पेश करा गया था उसमें भी दे सेड कि यू नो व्हाट, एयरलाइंस को दे आर गोइंग टू फोकस अ लॉट, दे आर गोइंग टू ओपन न्यू एयरपोर्ट्स, उड़ान स्कीम निकाली गई थी एंड ऑल दैट स्टफ. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अ लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी. दिस इज अ मच नीडेड स्पेस. सो इट्स नॉट एज इफ दैट फ्रॉम एन इंडस्ट्री व्यू पॉइंट देयर इज सम इशू गोइंग ऑन. सो दिस इज पार्ट वन. पार्ट टू अब आता है कि यार देखो, जो भी देयर इज अ जोक दैट गोज अराउंड दैट हे इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर देन यू स्टार्ट एज अ बिलियनेयर, इन्वेस्ट इन एन एयरलाइंस एंड यू विल बिकम अ मिलियनेयर. Yes, that is true, but अगर हम अच्छी एयरलाइंस पिक करें, जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया इंडिगो और इंटरग्लोब एविएशन को अगर आप पिक करो तो आप उसकी परफॉर्मेंस देखो तो वहाँ पे क्या सच में ऐसा हुआ था कि नो, बेसिकली आप देख लो जब से शुरू हुआ है तो इट हैज़ गिवन लाइक गुड गेन्स, राइट. आई मीन इट हैज़ गॉन अप. व्हाई? बिकॉज द नंबर्स मेक सेंस. सो इट्स नॉट एज इफ की सारी एयरलाइंस बेकार होती हैं एंड यू नो दे कैन नॉट फिगर आउट अ प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल एंड ऑल दैट स्टफ. No, I think the airline industry is maturing. This is a trend that we need to study more. We have to analyze more, but we cannot just simply discard by looking at that joke wali cheez, right? So studying this industry is worth considering from that viewpoint. A lot of developed nations, for example, जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या फिर यूएस जाओ तो वहाँ पे the airline penetration is pretty much maxed out. But in India that is not the case. India में this is picking up and this might be a multi-bagger sector in the next few decades. This is definite possibility. So anyways, I hope the first key topic is clear कि भाई industry में there is no such issue per se. The issue from an industry viewpoint is very simple कि see, this is a highly regulated industry. For example, जैसे almost 60% of the cost structure of an airline is due to the aviation turbine fuel. And उसमें से भी अगर आप cost breakup देखोगे aviation turbine fuel का, तो जैसे पेट्रोल डीजल में टैक्सेस भर के लगाए जाते हैं, वैसे ही ATF में टैक्सेस भर के लगाए जाएंगे. Then there are airport charges, hangar charges, what not charges on airlines which the government imposes and उनको follow करने पड़ते हैं. There is nothing that they can do. This is highly regulated industry, as regulated as it possibly can be.
सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करवाने पड़ते हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड, सो उसमें बहुत खर्चे होते हैं एयरलाइंस के एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट ऑलवेज इज देयर. बट सी द रेगुलेशंस आर गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल द एयरलाइंस, सो इट्स नॉट एज इफ की there will be like favored rules for one over the other, so nothing of that sort is there. So this is a point which we can analyze, but honestly we'll not get much clarity on. So this is point 1. Point 2, now comes the question about SpiceJet कि भाई SpiceJet में ऐसा क्या हो गया कि इतनी दिक्कतें आ गई, एंड वाई इज इट अ टर्न अराउंड, एंड इज इट अ टर्न अराउंड वर्थ इन्वेस्टिंग इन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टॉपिक दैट आई विल नाउ कवर. सो ओके, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज दी ऑल दी डेटा और टाइम लाइन कि क्या क्या इशूज़ हुए हैं SpiceJet में. वॉट यू विल नोटिस इज दैट सी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उनके इंजन फेलियर्स हुए थे, राइट. सो दिस इज़ अ पॉइंट दैट वी शुड इन्वेस्टिगेट कि भाई ऐसे इंजन फेलियर्स हो गए थे 2022 में. डर लगता था लोगों को फ्लाइट बुक करने में SpiceJet की, राइट. सो ऐसा क्यों हुआ था, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो. व्हाट आर द की challenges that it faced? Now see, as an airline, SpiceJet faced a lot of challenges, but I'll just boil it down to 3 central things. Number 1 thing is that the ATF or aviation turbine fuel की cost बहुत ज़्यादा थी. This was making up roughly 65% of operating expense for SpiceJet and the other airlines also. So this was point 1 कि भाई crude की prices बहुत ज़्यादा थी. अभी क्या situation है crude की prices के, so फटाफट देख लेते हैं. So this is the crude history and आप देखोगे कि crude की prices हमेशा कब बढ़ती हैं, right? The crude prices go down after a major crisis, then it goes up, right? And then it stagnates. ये ऐसा ही हुआ था 2008 में, ऐसे ही हुआ 2020 में कि एकदम से डिमांड कम हो जाती है, राइट. सो द ATF प्राइसेस गोज डाउन, क्रूड प्राइस गो डाउन, सो ATF ऑल्सो गोज डाउन, एंड फिर एकदम से बढ़ जाता है, फिर इट स्टैग्नेट. सो अभी स्टैग्नेशन फेज में है ATF की. सो वट एवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इट इज लाइकली टू स्टे द सेम. सो यहाँ पे वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड नहीं है, विच इज अ गुड पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी. इट struggled because ATF के prices बढ़ गए थे, right, in 2021 2022 के आसपास. Now it has started to stagnate. This is one. Second key thing was the engine failure issue. अब इसमें आपको थोड़ा सा है ना पता होना चाहिए background, right. उसके लिए मैं आपको इंडिगो की फटाफट केस स्टडी प्रेजेंट करता हूँ, right. So उसमें था क्या कि फॉर एग्जाम्पल इंडिगो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस इन इंडिया because of the fact that they got a very good contract from Airbus. Now when it comes to buying these aeroplanes, what happens is that there are 2 companies in the world that supply it. One is Airbus and another one is Boeing. Now when Indigo decided to start its operations, उसने क्या किया कि they ended up ordering 100 aircrafts from Airbus. Now Airbus at that point in time was struggling in its business because majority of the counterparties or its clients were going to Boeing. But Indigo placed an order with Airbus and अब ये 100 एयरक्राफ्ट आने में ऐसा नहीं होता कि आपने आज ऑर्डर प्लेस किया कल आ गए, राइट. नाउ दिस टेक्स ईयर्स टू कम, राइट. इट टेक्स 5 to 7 years फॉर दीज 100 एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स टू ट्रांसपायर. सो इंडिगो गॉट अ वेरी गुड डील इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग दीज 100 एयरक्राफ्ट. सो इट वॉज एबल टू टाइम द साइकिल रियली वेल एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड ग्रो इट्स बिजनेस. नाउ इस तरीके का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज SpiceJet नेवर हैड एंड इट विल नेवर हैव, राइट. सो दैट इज द बॉटम लाइन हियर बिकॉज Indigo was able to time a very good cycle where its supplier was struggling and they were able to strike a very good deal, right. So that is the long story here. वो किस्मत का खेल भी है, right, and a lot of good things Indigo does. But वहाँ पे SpiceJet cannot compete with Indigo. So anyways, SpiceJet was operating older fleets. It had engine issues. When it comes to engine repair, engine modification and engine maintenance and all that, so there are again a handful of companies that do that. उनका काम बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा था in 2021 2022. SpiceJet's fleet was old. They had a large number of planes to maintain, so उनकी maintenance proper नहीं हो रही थी. Now after all these issues that transpired in 2022, government has put in a lot of nakel and lot of pressure on the safety and ensuring customer safety. So उसके तहत उनको maintenance करनी ही पड़ेगी, otherwise they will have to ground their planes, जो उन्होंने किया भी. So SpiceJet had already done that. So this entire fleet maintenance issue, it has already played out. Now the third key problem that SpiceJet was facing was related to Indigo getting market share. Now अब Indigo was gaining a lot of market share and SpiceJet का नहीं हो रहा था, तो SpiceJet decided to do some डिस्काउंटिंग. ओके, सो कट करो कॉस्ट, दिवाली ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, राइट, एंड ऑल दैट स्टफ, बस बेचो सीटें, राइट. सो दे बिकेम वेरी वेरी अनप्रॉफिटेबल. दे बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट एंड स्टार्टेड रनिंग दीज टाइप ऑफ ऑफर्स वेरी सिमिलर टू स्विगी जोमैटो इन its early days. But honestly that race is again seems to be over. Why? Because a lot of consolidation has happened in the airlines industry in the year 2022 and 2023 both.
सो अब जो मार्केट लग रहा है इन 2024 फॉर एयरलाइंस, दिस लुक्स स्लाइटली मोर स्टेबल. सो ये सारी चीजें हम फंडामेंटल डेटा पे भी देख लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ यू एक्चुअली गो टेक अ लुक एट इट्स बैलेंस शीट, सो यू विल सी दैट इट्स बोरोइंग पीक्ड टू 9,518 एंड अब धीरे धीरे करके दे आर ब्रिंगिंग देयर बोरोइंग डाउन. दिस इज अ हेल्दी साइन, राइट? सो दिस शोज दैट दे आर ट्राइंग टू वर्क देयर वे टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस पे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सी दिस वाज द मैक्सिमम लॉस दैट दे हैड, राइट? सो मैक्सिमम लॉस इनका 2022 में आया था. अब कट के इट हैज बिकम लाइक -148. सो दिस इज अ मैनेजेबल नंबर, राइट? एंड होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दिस विल टर्न अराउंड एंड व्हेनेवर दिस बिकम्स पॉजिटिव इट विल बी अ हेल्दियर साइन, राइट? सो both from a debt reduction viewpoint, from industry consolidation viewpoint, from numbers viewpoint, if we check the balance sheet, it looks okay from that angle. Now comes the exact question that how are they exactly turning around? तो आपको यहाँ पे numbers में भी दिखेंगे. I have collected some data. So for example, you can see that in January of 23, their market share was 7.3. Then it fell quite a lot and फिर वो धीरे धीरे since last year it has started to come back up. Usually around 8% होता है, 8.5% SpiceJet का share. So hopefully उस numbers पे वापस पहुंच जाएगा and once that is the case and the company becomes profitable, it should hopefully start reflecting in their stock price also. So the first key theme around their turnaround is gaining more market share, and are they doing it? The short answer is yes. Number two turnaround point has to do with the reduction of debt. They are again doing that. The third key point comes from the fact that they are focusing on alternate business. So फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव कलेक्टेड सम नंबर्स फॉर यू, जहाँ पे इन्होंने कार्गो बिजनेस अपना डेवलप करना काफी शुरू किया है. इन 2017 दिस यूज्ड टू मेक अप 3.4% ऑफ इट्स एंटायर रेवेन्यूज. नाउ इट्स मेकिंग क्लोज टू 9%. सो दे आर फोकसिंग ऑन दिस बिजनेस ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट की पॉइंट दैट दे आर लुकिंग फॉर इज एक्सपेंशन. सो अभी इन्होंने रिसेंटली एक जॉइंट बिड सबमिट करी थी विथ बिजी बी एयरवे to acquire Go First Air, right? And Go First bankrupt हुई थी, so someone is going to acquire it. So this again falls into consolidation. So it looks like that SpiceJet is not going to get eaten. Rather, it will go and acquire and expand its capacity further, which might be beneficial for the business going forward. So yeah, so these are the critical points that you should know in case you are deciding to invest in this business. This is definitely not recommendation कि आपने करनी चाहिए. There are pros and cons to investing in this business. I have explained both the sides of the story. Now, if you feel that adding an infra-oriented, capital-intensive industry makes sense, then definitely you can put this stock on your watch list. Keep tracking it. अगर उनकी borrowing कम होती चली जा रही है and you are seeing them acquiring more and more assets, then it might be a time to acquire it. At least ये overvalued नहीं है from that perspective. I hope that you enjoyed this brief conversation. If you did, do press the like button and I'll see you soon.